उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धांत समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनके चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मन में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते हो, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादे भी करते रहे, तुम भी करते रहो लक्ष्मी मैया। फिर बाप दादे के पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आई। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, एक हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमनारायण भय दारुणम कंज लोचन कंज मुकर कंज पद गंजारुण में स्तुति किया। और उसने कहा कि भगवान राम खुश हुए। उसके बच्चे बोल कैसे आया, उनकी मेरी पत्नी खो गई है। उनके देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी, तो हनुमान जी तुम आ जा। तो डिपार्टमेंट बनते हुए अब तुम नवकंज रोज निकलते हो राम जी के पास, तो राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई, कहां से लाएंगे राम जी के साथ, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार है, 1 घंटे पर आरती तो सुनाई दे। मैं खुद भी नहीं बेचा, 13 साल बैठा था मैं, तो वहां जा वो काम करो। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो, तो भैया मैं खुद कुंवार हूं, पितृ हूं, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और आज जो सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रखती है, वो त्याग नहीं है। तुम्हारे केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस हो। मेरे आगे कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मगर मुझे मिठाई ला के, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई की डब्बा ला के, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जिससे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने पैसे लेके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे थे।
चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहाँ एक अच्छा कार्य अगर मैं नहीं होता तो दूसरा शराब पार्टी खोल, यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब जिसकी बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं, नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कोई पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के, यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहे हैं। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक वायर, तो वो तुम्हारा त्याग, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहे। उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाए कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहां त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारे समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें मैं नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आप चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा, तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित है। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। स्वयं शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाए। ये शिष्य का मतलब नहीं कहा गुरु जी। आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था, मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब 200 शिष्य मेरे साथ में थे, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भर करके बत्तियां लगाई थी। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई भी साथ में थी, जैसे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आया। अब मैं मुंह नीचे को ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो घटना अब कितनी जाएगी थे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से दायक नहीं, अब कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं कहूंगा तो मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दूं और नदी का जय गुरुदेव दयानिधि। अब मैं दयानिधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं आज से उसकी आरती को ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते? एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैं तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरुजी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा मौका, बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने अधिकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मेरे भाई बेचारे घबराई, सोचे कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तक ताके,
मेरा हाथ से टल्ला मारे, तुम टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी। बाकी तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ, तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आप। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है, वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि 8 मास का आदमी है, देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ। तब वो जब चरण छूता है, तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए, एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अगर गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, तकलीफ तो है नहीं मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जब तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखियन की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूँ, और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूँ। अंखियन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की मैं चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूँ। प्रिय को लिया रिझा, ऐसा करके मैं प्रिय को ले जाना चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखन दे तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समापित कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्ट सारी, वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला हरामी है, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, मौका आएगा तो। अब वो चिंता साली आई नहीं, कर्नाटक प्लेस में कहा तो था आने का, क्या फिर अभी 5 मिनट और देखते थे शायद आ जाए, आई नहीं। उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला हरामी है, और आई नहीं 2 घंटे 2-2.5 घंटे उसके घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते, फिर भी जाएगा और दूसरे जगह का देखेगा, दिखाई नहीं देगा, फिर रात भर तड़फेगा। अब टेलीफोन है, टेलीफोन करें कैसे करें, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन, ये भी एडेक्स है, ये बुढ़िया मरे ना साला टेलीफोन। पर सारी रात वो घुमड़ चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी को संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए खाने का ठीक है, बुढ़ी कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तक तुम्हारे सामने इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जो तुमने शादी की नहीं हर बात तुम्हारा वो सारा जोश खत्म था, न तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढने शुरू कर दे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसके अब उसके बाद वो कहे तुम लेट आते, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठेका है तुम्हारे पास में जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके बाद आज खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मैं ठीक है डॉक्टर के पास चली, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, तो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है, यूं देख रहा है, तो देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना।
Your problems and the solutions to them constitutes one path. The spiritual elevation of life is another path. The second path is more significant as it is the way to activation of Kundalini, the way to Sahasrar, the way to realization of God, the way to establish the Guru in yourself, the way to salvation, and the way to Siddhashram. Along with moving on the first path, you should also strive to progress on this second path. And there are three conditions for moving forward on this path. Firstly, you should offer your selfless services to the Guru. If you do not serve him, you cannot progress on this path. Selfless service is the basis to spiritual enlightenment. You people are not serving the Guru. You can't experience the divinity of river Ganga in his holy feet. You look at his feet as merely his feet, and hence you cannot become enlightened. State of enlightenment means that on seeing him, your eyes fill up with tears of joy. It means that you cannot remain without seeing him even for one day. You should reach a state that if you are not able to meet him for over a week, you become so much impatient that you lose all interest in your work and always keep planning how to meet him. And such a bond should develop that the Guru too becomes restless when you do not meet him for so long. This is the state of an awakened conscience. But all you do is the recitation of Hanuman Chalisa. What can be achieved by just mechanically reading the Chalisa? You may spend all your life offering oblations in the holy fire. You may sing hymns in praise of Lakshmi. Your ancestors did this, and so can you. But Lakshmi never appeared before your father or forefathers, and she won't appear even before you. Your ancestors have merely burnt butter in the fire, and you too are doing the same. Lakshmi won't appear by burning incense or singing hymns. There is a different way to make her appear, and that way is the path of divine knowledge. You should become enlightened and should no longer remain lifeless. You are like a living corpse, and you are imprisoned in a small house along with your wife, your mother, sons, grandsons, and some money. You do not possess anything else. Leave that small enclosure and enter into this vast expanse of spirituality. This is the path of sadhana where first you shall have to develop a spirit of serving others. If you offer 5 rupees to Lord Hanuman with the hope that he would help you win a lottery, then your whole thinking process is wrong. Why wouldn't Hanuman win a lottery for himself instead of helping you win? There was once a temple of Lord Hanuman, and 1 mile away from it there was a temple of Lord Rama. A person went to the temple of Rama and started praying to Lord Rama. After performing worship, he offered sweets to the deity. Lord Rama was pleased. He appeared before him and said, "Well, son, why are you here?" The man replied, "My wife is missing. Please help me." At this, Rama said, "This is not my work. 1 mile from here is Lord Hanuman's temple, who looks after this department. When my wife was missing, I too sought his help, and he found her. Hence, you go to him." Here the departments have actually been divided. If you go and tell Lord Rama that your wife is missing, he won't be able to help you. You shall have to go to Lord Hanuman. Rama will only say, "I myself could not find my wife. Go to Hanuman,
he shall help you. And if you go to Hanuman and say that you are not able to get married, he will say, I am myself unmarried. I could not find a girl for myself, then where shall I find one for you? What we have done is that we have divided the work among all the gods. Each god has his own work. Hence nothing can be achieved if you offer 5 rupees to them and pray to them with folded hands. You shall have to perform sadhana and make the gods appear before you. Offering service means selfless services. You should not have any selfish motive, and along with selfless service, there should be a feeling of sacrifice for the good of others. Sacrifice of something which is most liked by you. If you have 5 kgs of sweets and you give 1 piece to someone, then this is not sacrifice. But if you have 1 loaf of bread and you give half of it to someone, then this shall be true sacrifice. But sacrifice must be made only for the good of others, or where it has some significance. If you buy a shirt for 100 rupees and offer it to me, then this is no sacrifice. This act is useless, for I already have 40 to 50 shirts and I don't need any more. If you bring sweets for me, then they too shall go waste, for I do not eat sweets. I don't expect such material things from you. On the other hand, it would be more useful if you contribute your efforts in the progress of the work of the trust. I have bought a land, and if someone builds a hall on it for the benefit of the sadhaks and the general public, then he shall surely obtain the results of his good deed. It does not matter how much the benefits of the results are, but what matters is that he has contributed to a good cause. If I had not planned to make the ashram, someone might have set up a bar there and people would have consumed liquor at that very place. This could have happened, but now only holy ceremonies, sadhanas, shall be performed there. And if you contribute in such work, then this shall be your sacrifice. Your help shall prove to be beneficial to thousands of people and more useful than if you offer gifts and sweets to me. Service means that through which the common man can benefit. This place needs a good signboard. I am not asking you to get one painted. I want to tell you that any work which has some general utility is a good service. You may be in any temple or in any place, wherever sacrifice and services are required, you should move forward to help. Service, sacrifice and devotion are the 3 steps to spiritual enlightenment. Devotion means dedicating everything you possess, giving up all you have, and becoming one before whom or before what you devote yourself. When devotion is complete, you shall obtain everything. Thus you have to first empty out everything if you want to acquire the spiritual treasure. When the jug is empty, it can be filled again to its brim with one liquid. If your mind, your thoughts are already full, then I cannot write anything new on it, and my whole discourse shall go in vain. Only when you bring a plain, empty sheet of paper shall you be able to read the lines which I shall inscribe on it. If already it is filled with lies, deceit, immorality, then what can I write on it? Where shall I write? You say to your Guru, I have given up all I possess to you and am now empty. I am sitting in your feet, and it is up to you to give whatever shape or form to my life according to your wish. Till now I have lived life as I wished.
Now you teach me how to live. You tell me what to do and how to do. I shall do whatever you ask me to. This is devotion. When you become devoted, then your position, your fame, all become insignificant. Then even if you are a millionaire, it would have no significance. Devotion means that you are nothing. It won't do if you say that you are devoted and then feel proud that you are an officer or you are such a great scholar. This is not devotion. Devotion means you are nothing at all, that you are empty, that you have no position, no fame, no money, no power, no wealth and nothing. Whatever you do have in material terms is at your home. Here in the feet of the Guru, you are fully devoted. And when a person reaches this stage, he becomes a true disciple. He is not a disciple from the beginning. First, he is just a curious person, then he becomes enlightened, and after adopting the three principles, service, sacrifice and devotion, he becomes a disciple. Disciple in Sanskrit is Shishya and it means to come closer. The disciple always comes closer to the Guru. This does not mean that he should go and embrace the Guru. This is not what I mean by coming closer. About 4 to 5 years back, when I was returning from Gangotri, there was this disciple who made very good arrangements for the 200 disciples who were with me. He arranged for their stay and their food. I promised to visit his house in Hyderabad. When I reached Hyderabad, he had hired a musical band and was feeling very happy. He had arranged for us to stay in a guest house, and on the gate of the place he stood with a plate containing a dozen lighted earthen lamps for Arati. When I reached the gate, he started the Arati. I stood there with my wife and some other disciples as he performed the ceremony. While performing the Arati, he came closer and closer, and soon the flames from the dozen lamps were hardly an inch or two from my face. I turned my face and he came even closer. I strained my neck backwards to its limits. Still the intense heat reached me. I hesitated to say anything to him as all his relatives, friends stood nearby. I thought, if I say something, he will feel hurt, and if I don't, my brows and hair will burn. I moved a step backward, and he moved still closer. O Gurudev, thou art an ocean of kindness. He sang as he performed the Arati, and I said to myself that soon this ocean of kindness shall end up on a bed in some hospital. I extended my hand to stop the Arati, but he said, Guruji, it is rarely that we get a chance. You hardly come to visit us. I said to myself, you have got a chance and I am stuck up. This does not mean that you send me straight to a hospital. To him I said, perform Arati from a distance. He said, Guruji, such occasions do not present themselves again and again. Today we have at last got a chance. And speaking these words, he came still closer to me. The intense heat almost scorched my face, and it seemed as if ages had passed when the Arati finally concluded. Till then, my face had become red like a hot iron. My poor wife became overtly anxious at my sorry state. She kept looking at me
and with inquiring eyes, as if saying, "What is all this?" I said to her, "What can I do? Today I am caught up amongst my disciples. I have always been kind to them. Now it is up to them whether they shower me with their kindness or not. Shishya does not mean that you come and ram into me and then say that I had asked you to come closer. Believe me, for coming closer, it's not necessary for you to break my bones. Coming close means becoming one with my soul, forming a bond with my soul and with my heart. When the disciple reaches the third stage, he comes closer to the Guru. Coming closer means that even his thoughts are not his own. In this state, there remains no questions in his mind. Then he does not even think whether the Guru is an ordinary man of flesh and blood or he is a god. He only thinks that he is his Guru and his Guru is everything for him. When his thinking transforms in this manner and when he touches the feet of the Guru, he realizes divinity in those holy feet. When this happens, his eyes fill up with tears of joy, and thus the disciple learns how to devote himself fully. When he becomes fully devoted, he obtains everything from the Guru. In this relation of Guru and disciple, there is no give and take. Establishing yourself in the soul of the Guru means getting closer to him so that your soul and his soul fuse to become one, and even your physical form becomes one with that of the Guru. All the time, only one thought should remain in your mind, and that is how to make the Guru happy, because then the body of the Guru becomes your own, and if a thorn pricks the feet of your Guru, you feel the pain, you feel restless. You shall not be in distress, but shall still experience restlessness. Then you shall know that something is wrong. This shall happen only when your soul fuses with mine and becomes one with it. They shall become one when you become a disciple, when you devote yourself. Akiyan ki karkotari, putli palang bichai, palkan ki chik dar ke, piyu ko liya rinjai. These lines were spoken by Meera, and she says, Akiyan ki karkotari, that is, I want to make a room of my eyes. Putli palang bichai, I want to make a bed of the pupils in my eyes. Palkan ki chik darke, with the image of my beloved in my eyes, I shall close the curtain of my eyelids. Piyu ko liya rinjai, and thus I shall win over my beloved. She further says, Na mai dekhu aur ko, that is, then I shall look at no other man. Na tohe dekan dehu, and neither shall I let you see anyone else when I shall have confined you within my eyes. This is the state of complete devotion, and on reaching this stage, Kabir says, Main tumhari bahuriya hoon, that is, I am your beloved. And this is why the Shishyopanishad says that Guru and disciple are like two lovers, because the most close relation in this world is between two lovers, and such closeness is not seen even in the relation between a parent and a child or between a brother and a sister. This is because in this relation there is always something new and fresh. There is a deep longing to meet again and again. Both remain restless to be together. If the girl fails to turn up one day, the boy feels uneasy and worries lest she is unwell. Or maybe he thinks her parents have stopped her from coming to him and he starts abusing them. He remembers that she had promised to meet him in Connaught Place. He looks at his wristwatch
and realizes that there are still 5 minutes left. Perhaps she will come, he thinks. 2 hours pass and he still keeps waiting. It cannot be her fault, he says to himself. It is her father who is so mean. He decides to go to her house. What if her father sees me, he thinks. Still gathering some courage, he reaches her place and keeps standing some distance from her house in the hope that she would appear in the window or the terrace. She won't appear, and all night he shall remain perturbed. He cannot even ring her up because each time he gives a call, her mother picks up the phone. Why doesn't this old woman die? He says to himself. The whole night is spent waking without a moment's mental peace because this is the relation of 2 lovers and not a husband and wife. If you say to your wife that you don't wish to have food, instead of asking you if you are well or not, she won't even care and shall say, "Fine then, you can eat tomorrow." As lovers, you may have loved her deeply and your sweet affair may have lasted 2 years. But as soon as you got married, all the enthusiasm and love seemed to have vanished forever. You won't even feel like talking to her and shall start looking for another girlfriend. You shall think that now she is your wife, thus she shall remain forever, so there is nothing to worry about her. She shall ask you why you came late from office. You shall reply that you work in an office and that you are not her servant to arrive exactly at 5 o'clock. This is the same girl you loved so dearly. She will say that she has not had food since the previous evening and you shall not care at all. You shall ask her to better go to the doctor and then you shall not give another thought to her illness. This is because the mutual attraction has vanished. No such love exists between a husband and a wife. This is why it's always said that the deepest love is between 2 lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the 2 has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried and impatient. नारायणोत्वं निखिलेश्वरोत्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराजರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ